Seventh class in the 8th lecture of English grammar, page number 19 and chapter number 3. Today our topic is the past tense. As all of you know that in the previous lectures we have discussed the present tense, and it means the informative tense, and same as we will discuss the past tense, informative tense. When remaining in the past tense, in the past time we show the possession, we point out the things, and we give the information about ourselves and anyone else. It is called the informative tense. How can we show the possession or point out the things? See the examples. Emma was a tall, slim girl. In this sentence we are giving the information about the Emma, but in the past time में हम Emma के बारे में information दे रहे हैं. But in the past time, Mr. Robot was a famous doctor. Now here we are also giving the information about Mr. Robot, but in the past time. Okay, seventh class, we point out the things by using the two methods, by using the two words this or that. When we point out the things that we can touch, जब हम उन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में होती हैं, जो हमारी पहुंच में होती हैं, दे वो यूज़ दिस. लाइक दिस वाज माई पेन, ये मेरा पेन था. नाउ दिस वाज इन माई हैंड. इन द पास्ट टाइम, वो मेरे पास्ट टाइम में मेरे हैंड में था. आई कैन टच इट. एंड when we discuss about the things that we can't touch, जिनको हम टच नहीं कर सकते, they are at a distance from us, वो हमसे एक डिस्टेंस पे होती हैं. like that was a fan, वो एक फ़ैन था. now I couldn't touch in the past time, उसको मैं टच नहीं कर सकती थी. by just gesturing, उसको इशारे से बता रही हूँ कि हाँ that was a fan, वो फ़ैन था. here we use that. the things that we can touch, we use for them this, and the things that we can't touch, we use for them that. And we show the possession by saying that this was my house, this was my brother, such as. Now see, all the sentences given above are in the past tense. There are in the past tense. You can observe the verbs used in them are was or were. They are of the बी फैमिली से है, as I have told you in the previous lecture. These two verbs are the two forms of the verb be in the past time. बी फैमिली से ही in the past time. In the second lecture which you wrote her on Sunday, जो इसे संडे में लिखती है, she gave him the exciting news about the progress that she had become an famous author. वो उसे एक एक्साइटिंग न्यूज़ देती है कि वो एक ऑथर, एक फेमस राइटर बन चुकी है. एंड हर poems was published on the newspaper on February with the name of From My Tower. She also informed about the religious sermon given by the Bishop of Alabama. उस religious sermon के बारे में भी डिस्कस करती है जो कि बिशप देगा अल्बामा का. Next, she discussed about her failure in the maths and the Latin subject and promised that in the next time she would practice and work hard and will pass. Okay, seventh class, was is used with all the singular subjects, word is used with all the plural subjects. एक सब्जेक्ट के साथ हम वर्ड्स लगाते हैं एंड ज़्यादा सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ड लगाते हैं. बट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट आई इज़ आल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट बट इट कैरीज द plural verb with it. In each sentence it carries the plural verb with it except the past tense. past tense में इसके साथ सिर्फ singular verb आता है, बाकी सारे tenses में इसके साथ plural ही verb आता है. It carries the plural verb with it. Now second is negative form. How can we make the sentences, informative sentences, into negative sentences? Emma was not at all slim girl. When we negate any action happening or fact, that is the negative sentence. negative sentence में हम इसको चेंज कर देते हैं, but we write not after the verb के बाद हम क्या लगा देते हैं, not लगा देते हैं. Mr. Robot was not a famous doctor. verb के बाद हमने क्या लगा दिया, not लगा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, इंट्रोक्टिव फॉर्म में इसको कैसे चेंज कर सकते हैं. वी राइट द वर्ब सिंपली इन द स्टार्टिंग पे हम क्या लगा देते हैं, वर्ब लगा देते हैं बिफोर द सब्जेक्ट और एट द एंडिंग. टू शो इट अ इंट्रोक्टिव सेंटेंस वी राइट और रिप्लेस द
क्वेश्चन मार्क एट द एंड। फर्स्ट पे क्या लगा देते हैं, बिफोर द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। Next question number D, negative or interrogative form. When we are asking any question in the sentence on at the same time we negate any or fact or happening, that is negative or interrogative form. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा देते हैं, वर्ब लगा देते हैं। एंड आफ्टर राइट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। एंड और एट द एंडिंग वी प्लेस क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। लाइक, वर यू नॉट अ सिंसियर फ्रेंड ऑफ माइन, on the same time asking a question or negating the fact as well. Were before the subject and after the subject, not, and then at the ending question mark. Okay students, in all the informative sentences or tenses we don't use any action verb हम use नहीं करते, just by using the simple adjective or such type of things or nouns we tell about the tense, we give the information about the tenses. Now practice about the past informative tense and write more sentences about it.